enjoy these marriages and function is to enjoy the food over there if it is good. That is my own perspective about it. I enjoy the food over there than anything else. Hi guys, I'm heading for the ZT event, and ZT Z11 and N1. These are the two phones which are going to be launched today. Pullman Hotel, which is at Aerocity, so it is going to be a big grand event for them, and they will make a official entry, I would say. Although ZT is already there in India, but they want to be more active. They are going to launch their flagship phone today, which comes with Snapdragon 820. So that's a little update. इसके अलावा I do have one more meeting to attend, which is from Oppo. So Oppo meetup is going to happen after this. So I will be heading for that. तो पूरा दिन आज का बिजी जाने वाला है. बाकी दिल्ली में शादियाँ बहुत चल रही हैं, तो lots of marriages to attend, and work speed has become slow. तो काम इतना नहीं हो पा रहा है और शादियों में ज़्यादा जाना हो रहा है. आज हमारे रिलेटिव में घर में एक शादी है, तो उसके लिए मुझे जाना है. बट एनीवेज आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड एज वट एवर हैपन्स these days. But anyways, you guys stay cool and enjoy the marriages and other functions which you may attend. Okay, we are going through this underpass जो अपना एयरपोर्ट से आने से पहले होता है. तो बिकॉज द एरोसिटी इज़ नियर टू T3 एंड वी आर राइट नाउ हेडिंग टूवर्ड्स दैट. तो इसीलिए दिस पर्टिकुलर अंडरपास जो अभी किया है पीछे, ये आता है. I have just entered the Pullman Hotel. Event will start within like half an hour, and I just want to show you something. Can you see these things over there on top? And you know, these are very very tiny small lamps or whatever they call it, and they have a small LED basically, which is part of the lamp, and they look beautiful. And let me show you how they have basically put them. So it's like this, like this, like this, and then it goes up to that particular entry. प्लस 3T से ली है. तो अगर आप देखें इन दोनों को, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 6:30 बज गए हैं शाम के, और अब मैं वापस जा रहा हूँ घर. एंड आई हैव टू गो फॉर अ वेडिंग इज़ वेल टुडे, विच इज़ अ फैमिली वेडिंग. आई कांट मिस इट. बट ट्रैफिक का सीन देखिए आप लोग. अभी हम लोग सीपी में हैं और भर भर के ट्रैफिक है यहाँ पे. ट्रैफिक ही ट्रैफिक है. वी आर स्टक इन ट्रैफिक, एंड सब लोगों के साथ ही ऐसा है. और ऐसे में भूख भी लग रही है, तो आई got some samosas. This is one of the biggest samosa, one of the biggest, not the biggest, one of the biggest samosa here in Delhi, which you can eat here in CP. Embassy the Embassy restaurant के साथ में है यहाँ पे. वहाँ से आप ले सकते हैं. And they have bread pakoda stuff as well, all veg. And I'm going to eat this. कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा अभी घर पहुँचने में. उसके बाद we will leave for the wedding, and let's see how this day is going to end. I will record it. So guys, this looks like to be the end of the day. It's 3 a.m. in the morning,
and it's already 15th of December. I'm done with the editing of the videos which I wanted to do. I could not do this editing because my laptop died due to battery, and then when I reached back home I had to leave for a wedding. So anyways, all of the work sorted, and it's time to sleep, and that's it. So time to say goodbye to this vlog. I have tried including most of the things which I do in day to day in this vlog, so hopefully this will give you a little bit more idea than just a day which I normally record. So this is like series of events which has happened. So I hope you like this vlog, and in case you do, or in case you would like to say anything, use that comment section below. अच्छा ये तो बताइए, वो गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे होता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है और तकरीबन 9 बजे हैं अभी सुबह के, और आई एम जस्ट कमिंग बैक आफ्टर ड्रॉपिंग माय डॉटर टू स्कूल। और आज इवेंट जो है बेल्किन का एक इवेंट है, कुछ और चीज़ें होने वाली हैं, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। मैं ठीक से सो नहीं पाया रात को, आई वॉज वर्किंग लेट नाइट, तो थोड़ी आंखें भी दर्द हो रही हैं, बट एनीवेज दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर वर्क। So today is going to be a Belkin event, then there is one more meeting in the later part of the day, so I will attend that. Hectic जाने वाला है आज का भी दिन। Here for my second meeting of the day. This is Hoskas village, one of the very active area. You will see a lot of youngsters here, lots of cafes, coffee place, other restaurants, some place to just hang out. Very nice place actually, all young crowd, all educated crowd. So this place is normally very crowded, but at this point of time of the day it is not very crowded I would say, but हाँ crowd होना शुरू हो गया है। एंड आज थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन यहाँ पे इतना रश नहीं होता है। सो नॉर्मली थर्सडे यहाँ पे इतना बिजी नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सैटरडे एंड फ्राइडे दिस प्लेस इज़ वेरी क्राउडेड। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह का है माहौल यहाँ पे। उधर से चले जाइए ना, इधर से क्या दिक्कत है? शूटिंग कर रहे So guys, this is the fort of the Hoskas village, and as you can see, I wanted to show this to you guys, but looks like there is a shoot going on. There is some shooting going on for some movie, and they are not letting people go on that side. So that is why I have to basically go round like this to basically
come to this area because normally जब हम लोग हमारे जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स यहाँ पे आके छोटा मोटा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये लोग अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे। आज यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, लोगों को घूमने नहीं दे रहे हैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर बिकॉज दे वांट टू शूट, विच इज़ एक्चुअली सैड। बस मूवी वालों के ही फिक्र है इन लोगों को, कोई यूट्यूब क्रिएटर्स कुछ ना कर लें यहाँ पे। उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों को। अगर हम छोटा सा कैमरा लेके आ जाएं अपना DSLR, तो इतना सारा इक्विपमेंट लेके आए हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो लेट मी शो यू द लेक पार्ट जो कि हॉस्कास विलेज के इस फोर्ट के दूसरी साइड पे है। ओके, सो दैट्स इट। So this lake actually is very nice, and then we have lots of youngsters taking some photos over there. Over there they are taking selfies. Yes. So let me show you what exactly I wanted to show. Okay. So here I am. Okay. And that's the lake which I wanted to show you. What you just saw, this is Drums of Heaven at Da Square here at CCD, and this is one of the best thing you can have here. In case you eat non-veg, you should definitely try this out. And again, because I'm working for some of the proposal related to for some of the meetings, so I was feeling hungry, so मैंने ये order कर लिया, and this is very nice. They give it with this small tartar dip sauce, and then these chicken legs and some vegetables over there, which I don't like much, but again that's okay. So overall this is very light in terms of what you want to eat when you are out for meetings and you are on the go, and sufficient enough to satisfy your hunger for some hours. So one more box for the unboxing, and let me open it and show you what do we have. So this is the Yoke X band, the smart band from Portronics. My daughter, she loves Chhota Bheem.